प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 21 श्री बालकनाथ जी, श्रीमती रंजीता कोली, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। जरा देखना संसदीय कार्य मंत्री जी, क्वेश्चन लगा के। श्रीमती जसकौर मीणा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं क्वेश्चन नंबर 21 के ख भाग पर एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं और मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के करौली जिले में पांचना बांध के जल का उपयोग किसी न सिंचाई के लिए न पेयजल के लिए किया जा रहा है। इसका मैं उत्तर चाहती हूं कि इस जल को विगत 10 वर्षों से क्यों संकलित करके रखा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न पूर्ण रूप से राज्य सरकार के परव्यू का प्रश्न है और पांचना बांध पर जो है न्यायालय में कुछ विषय लंबित है, उसको लेकर के अभी निर्णय नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है उसका उपयोग होना चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकार को जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, निरंतर हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब भी इस पर निर्णय होगा तभी इस पर आगे कुछ हो पाएगा। के सुरेश जी। Honorable Speaker, sir, this question is very important question, sir, as far as this country is concerned, sir. Sir, majority of the people now using contaminated water everywhere in the country. So especially in my parliamentary constituency in Kerala, Kuttanad, Alappuzha district. So Vembanad Lake is totally contaminated water. In my region, Kuttanad, once water bodies are totally contaminated because the farmers are using pesticides for their paddy field, and also hash and other organs throughout cover the water bodies. The people of Kuttanad is using this water. That's why cancer patients are increasing day by day in Kuttanad area. So I would like to ask Honourable Minister through you, sir, whether there is any mechanism from the Government of India to avoid to remove the contaminated water and providing pure drinking water for Kuttanad area as well as throughout the country. Honourable Speaker, sir, as you are aware, sir, the government is running a drinking water program in mission mode to provide safe, clean, and with a stipulated quantity drinking water to each and every rural household of the country under the name Jal Jeevan Mission. Water being a state subject, the primary planning, making of the DPRs, augmentation, implementation, operation and maintenance, everything is to be done by the states. We are supplementing their efforts financially or technically if desired. State of Kerala, they are implementing Jal Jeevan Mission and simultaneously to provide safe and clean drinking water and to create an ecosystem of water testing protocol. Under Jal Jeevan Mission, we have taken many initiatives. Throughout the country, we have established more than 2,000 laboratories and NABL accredited laboratories. We have created a platform where the entire water quality data is to be kept. Apart from those 2,000 laboratories, we have trained almost 1.5 million ladies in the country to test the water which is being dispersed in their homes or in their habitations through field testing kits. And simultaneously, we are moving further to establish the IoT-based, sensor-based
water testing protocol, which we have established more than a year ago on 100 locations and successfully metering all those. So on the platform what we have created, in last 1 year of time, in 2022-23, more than 75 lakh samples were received, tested, and if they found there is any type of contamination is found, it has been taken care. We have reported states and continuously working with that. So if anybody any assistance for contaminated water which is being treated, also if any assistance is sought by the states, we are ready to give. Otherwise, also in Jal Jeevan Mission, we are giving 10% extra weightage to the quality compromised habitations and the states during allocation of funds. देखिए, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हर घर जल नल योजना को साकार करने के लिए पेयजल के क्षेत्र में सराहनीय पहल के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जानना चाहते हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के सदर बेलखरनाथ धाम और लक्ष्मणपुर समेत अर्धसैनिक फ्लोराइड्स, आयरन और नाइट्रेट के उच्च स्तर पाने वाली पीने से बढ़ रही विकलांगता और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में विस्तार से बस तो ठीक है, नमस्कार, कहा है, वही उत्तर फिर कि राज्य सरकार इसमें रिपीट तो करना ही नहीं है संसद में। ओके, रितेश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने अभी बताया कि करीब 1 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है, 13 लाख से अधिक महिलाओं, 15 लाख से अधिक महिलाओं को ट्रेन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये महिलाएं जिनको ट्रेन किया गया है, आप इनको प्रोत्साहन के लिए क्या कोई व्यवस्था दे रहे हैं, या इनको आप आगे चल के नियमित करके इनको कोई राशि देने का काम करेंगे ताकि इन महिलाओं को जो है एक हिसाब से रोजगार भी मिलने का काम हो? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की संकल्पना की थी, उनके गुजरात के अनुभव के आधार पर और स्वच्छ भारत मिशन में जिस तरह का अनुभव हमने अर्जित किया था, उस अनुभव के आधार पर किसी भी योजना को संधारण की जिम्मेदारी, उसको रखरखाव और परिचालन की जिम्मेदारी यदि जनता अपने कंधों पर ले, समाज अपने कंधों पर ले, तो उसे बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। और अनुभव ऐसा आया है कि यदि महिलाओं को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से, और मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी महिला बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो निश्चित रूप से इसमें मेरी बात का समर्थन करेंगे कि यदि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो वो और अधिक बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन और रखरखाव कर सकती हैं। इसी अपेक्षा के साथ में समाज जल जीवन मिशन के द्वारा बनाई गई योजनाओं की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, गांव अपने कंधों पर ले, इस लक्ष्य को लेकर के देश भर के हर एक गांव में जहां योजना बनाई जा रही है वहां 21 जनों की एक समिति बनाना ऐसा प्रस्तावित किया गया और उसे तय किया गया उसमें 50% कम से कम महिलाएं हों और पानी पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच महिलाओं के जिम्मे हो। उनको न केवल ट्रेन किया, अभी तो उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स भी दिया ताकि वो पानी की गुणवत्ता की जांच भी कर सकें और इस भरोसे के साथ में अपने परिवारजनों और परिजनों को पीने का पानी पिला सकें और उपयोग में ले सकें कि वो किसी भी तरह के से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी जो है ट्रेनिंग के बाद में कहीं रोजगार या ऐसा कोई विषय नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी, वो अपने स्टेट्स जो है असेट्स की और अपने लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी लें, इस तरह का भाव इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 22 श्री जगन्नाथ सरकार। माननीय मंत्री जी, आप जगन्नाथ सरकार क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 22 माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पे रखा गया। माननीय सदस्य वो मेरा जो क्षेत्र है नवद्वीप स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य से अवतार हुआ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अभी क्या है, इस वहाँ एम्स हो रहा है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, इसलिए वो जो विमान परिसेवा के लिए गवर्नमेंट के तरफ क्या स्थिति है, क्या प्लानिंग है, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी।
अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न हमारे यात्रियों की सेवा और उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके समाधान के विषय पर है। अगर सांसद महोदय जरूर आकर मुझे मिलेंगे, उस पर विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। श्री दयानिधि मारन। Thank you, sir. Thank you for giving me an opportunity. Sir, the Minister has been very active, and my question pertains to his question that redressing of the complaints received by the passengers. Sir, post-COVID, the air traffic has increased incredibly, and throughout India, every in-city airport is now jam-packed at the peak times. I've been seeing the statements given by the Minister to address the problem, but do understand that it's a daily ongoing process, and every day passengers are queuing up just to clear the security part of it, and sometimes passengers are missing their flights because of the traffic. So this is quite concern for all of us, because no steps have been taken. Because you had the COVID time where you could have expanded your security process or expand the area base, but nothing has been done, especially the peak traffic, sir. And the second part of the question, sir, I would like to know, when will you go inaugurate new Chennai terminal, which is nearly ready, so which is very important to us. Thank you, sir. Sir, the learned member, I would like to add, the question is on customer service and the Air Seva portal. However, the learned member has raised two extremely pertinent and important queries. One is related to the resurgence of traffic in the area of civil aviation. We have, as we are all aware, gone through one of the most turbulent times in civil aviation across the world during COVID, where all planes were stranded on the ground. It's probably one of the industries that was the most worst affected. And suffice to say, because of the policies of the government as well as the desire of customers to travel, we have experienced today a V-shaped recovery. I'd also like to report to this House that pre-COVID in 2019, the highest number of travelers per day experienced in India in its history was roughly about 4.07 lakh. We have broken that barrier 3 days ago, and we have reached the target of 4.13 lakh passengers per day. This talks to a great deal in terms of this government's and the Prime Minister's prerogative of, first of all, democratizing the area of civil aviation, increasing the breadth of civil aviation as well as increasing the depth of civil aviation. That, of course, brings with it issues with regard to crowding at airports. Also, we have to understand that civil aviation has a seasonality to it. The festive season starting from October until February is the peak season. We then have the normal season from March till roughly about May. And then we have a lean season in the monsoon from roughly about June till the end of September. I have had a very detailed meeting with not only our airport operators yesterday, but along with that with immigration, along with that with CISF. And what I have requested them is that we must put in a plan in terms of peak hour planning for arrivals and departures, not based upon just an airport's capability of runway takeoff and landings, but on the whole process capability, right from when our passenger enters the airport to when he goes in for security check, to when he goes in for a baggage drop-off, and then goes to the gate. And look at the whole process based on which we should manage our number of arrivals and departures in peak hour traffic. So there's a great degree of volatility today. We need to smoothen out that volatility curve. All the airports have pretty much come on board, and very similar to the fog planning that we do in the winter schedule, I have requested them to also do this peak hour planning. Today, as we speak, that process is on, and I'm quite sure that we will be able to manage in India, unlike what we experienced in the US and Europe and many developed parts of the world. When there was a resurgence of traffic, there was mayhem at airports, baggage was getting lost. Our airports in India did a yeoman's job during that process, and even now with this new height of passenger traffic, we will smoothen out that process in the days to come. I'm very confident with our airport operators. Thank you. Srimati Mahbooba Motra. Mahbooba Motra ji.
नहीं, आपने इनके बाद देना आप सब. Thank you, Honourable Speaker, sir, for allowing my question. Actually, this is related directly to customer service with air service, and I'd like to put the question to the Honourable Minister. This is something where a lot of aged people in India have children staying abroad and travel, say, once a year. Now, for example, if you're buying a ticket from Calcutta on Vistara to London, there is no direct flight, so the flight routes you to Delhi, via Delhi. You purchase a ticket which is Calcutta-Delhi, Calcutta-London. On the way, your luggage is booked through. On the way back, for example, a 75-year-old or 80-year-old couple, on the way back, have to land in Delhi, wait at the baggage belt, take out their luggage, and then go themselves and rebook it to Calcutta. If you're going on British Airways on the way through, it's fine. On the way back, for example, if the flight is via Bangalore, they have to be at Bangalore airport at the baggage belt, take out these heavy suitcases on their own, then go and rebook it to Calcutta. For example, if you're traveling British Airways from here to Paris and the changeover is in London, your luggage is booked through to Paris. You don't have to take it out in London. So is this something that we really need to take up with international airlines, that you're having to break this, and older people and disabled people have to face a huge amount of problems taking out luggage themselves, putting it in, so this is something if you could, this is something if we could please take up. Thank you, sir. 1 मिनट मंत्री जी, मेरा इतना ऐसा आग्रह है कि मैं सब सदस्यों को बोलने का मौका देता हूं, पर कई माननीय सदस्य ट्विटर में बहुत जल्दी लिखते हैं कि स्पीकर बोलने का मौका नहीं देता. कम से कम उसका ध्यान रखें कि ट्विटर पे कभी स्पीकर के बारे में न लिखे, अच्छा होगा. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी. Sir, I think that the member has put forward a very valuable suggestion. We will certainly look into that matter. For us, our elderly folks, our elderly population is an extremely important segment of our population, and it is our job to make sure that traveling becomes seamless and a very flexible process for them. So I shall certainly take that suggestion on board. As far as Mr. Baranji's question, which remained unanswered, which is the B part of his question, let me commit to him that we have a very, very aggressive expansion plan for the current Chennai terminal. We are spending almost 2,895 crores for that expansion plan, and the probable date of completion is somewhere in 2024. As soon as that gets done, we will certainly inaugurate it. Along with that, let me also suggest to him and request him that we would like to build a greenfield airport in Chennai as well. There is a new site that has been co-located between the state government as well as the central government. 4 sites had been offered. We've focused on one, which is Parandur. TIDCO had sent their proposal for site clearance to us. We have reverted to them with comments last month. If you can hasten up that process, it will help us very much. Shri Shashi Tharoor ji. Thank you very much, Mr. Speaker. I think this is an excellent omnibus question covering all the suggestions people are giving for airlines. And I wanted to mention one particular thing, is that the UDAN scheme, which of course serves underserved airports, we in Kerala are unable to benefit from this because none of our airports is technically underserved. But there are routes that are underserved or not even served at all. A question is coming up about Coimbatore a little later this morning. Classic example, there are no flights from any airport in Kerala to Coimbatore, even though it would actually be beneficial to people in eastern Kerala, in Palakkad, for example, where Coimbatore is the nearest airport. Could we not extend the benefits of the subsidy provided under the UDAN scheme to well-served airports with underserved routes? So, for example, when the governor, Sathasivan, used to have to go to Coimbatore from being governor of Kerala and Trivandrum, he had to fly to Chennai, change planes there and fly back to Coimbatore, which would be almost as long as going by road. And these kinds of things, we could easily have had a Trivandrum-Coimbatore flight, for example. Or indeed routes within Kerala, from Trivandrum up via Cochin, Kozhikode up to Kannur, 4 international airports, which don't benefit at the moment from any UDAN connectivity or subsidy. Thank you, Mr. Speaker.
So I thank the honourable member for his question on Udan, which again is not related to the core question, but I'm more than happy to answer that. It is our prerogative under the Prime Minister's leadership, as I mentioned, to both broaden as well as deepen civil aviation in India. Now, if we are to do that, we need to take the call. Are we going to do that with currently well-served airports in the country? Or are we going to both increase the penetration in rural areas as well as deepen that penetration in rural areas? And let me give a couple of examples of that. Many airports that have been wiped off the civil aviation map post-World War II, prior to independence in India, have resurfaced on the civil aviation map, all because of Prime Minister's Ude Desh Ki Aam Nagrik program. In the last 6 years, we have built out 70 airports, waterdromes and heliports under the Udan Yojana. Airports that one would never have conceived of. Rupsi in Assam, Darbhanga, Jharsuguda in Orissa, Kishangarh in Rajasthan. Airports that today give robust connectivity to earlier unserved populations across the length and breadth of our country, ranging between 50,000 passengers to 5.5 lakh passengers each. We have limited resources. Udan Yojana was given 4,500 crores in terms of capex and a viability gap funding program. Within that, today, we have transported in the last 6 years 1.1 crore passengers in our country that probably have never flown before in their lives. We have flown close to 2,15,000 flights in the last 6 years that would have never flown before. We have connected 70 airports along the length and breadth of India. And it is our target. Let me commit to our House, our hope that in the next 3 to 4 years, we will connect another 100 airports, waterdromes and heliports in India. Prior to independence, we had, prior to 13-14, we had 74 airports in our country. Today, in a matter of 8 years, we have built out a total of 71 additional airports, waterdromes and heliports, taking it to 145. So we are committed, but it is important to identify what our priority is. Once we increase our breadth, increase our depth, then certainly we will look at these areas without doubt. Thank you. Question number 23, श्री मलुक नागर जी आगे भी है. माननीय जल शक्ति मंत्री प्रश्न को पढ़ा माना जाए. माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा के सदन के पटल पर रखा गया. माननीय सदस्य. तो एक तो मेरी प्रार्थना है कि जो प्रश्न आए उसका जवाब या तो शाम को जरूर मिल जाए या सुबह 9 बजे तक जरूर मिल जाए. 11:15 बजे तक जवाब नहीं मिला, यहाँ आके जवाब लेना पड़ा है और 3 पेज का जवाब है. फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जब बाढ़ आए तो उस बाढ़ को इस तरह पूरे देश में फैलाएं, जो जहां सूखा पड़ता है उसको जोड़ा जाए. क्या कोई ऐसी योजना चालू है? अगर है तो कितने प्रदेश उससे पूरे हो गए हैं? और जो इसमें जवाब में 14 जगह बिंदु दिए हैं कि वहां गंगा जी के उस पे हम उसको संभालेंगे जो तटबंध कर रहे हैं, तो क्या बिजनौर जिले को, जिसमें बिजनौर लोकसभा और नगीना लोकसभा आती है, वहां कोई प्रोविजन रखा है? वहां के क्षेत्रीय विधायक जो बीजेपी का ही है, उसने उत्तर प्रदेश में मुद्दा उठाया. 63 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए पड़े हैं, नाबार्ड ने सैंक्शन भी कर दिए हैं. तो क्या उनको लगा करके साझे के उपक्रम में कोई ऐसा सरकार का कोई प्रोविजन है जिससे पूरा गंगा जी जहां से निकलती है और आगे तक, और बिजनौर एकदम बिल्कुल उत्तराखंड के सीमा मेरी लोकसभा की मिली हुई है, क्या कोई प्रोविजन है? ऐसा है? धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय. भारत में विशाल देश होने के नाते भारत में 2 तरह के विषय रहते हैं कि एक तो पानी जो बरसात से आता है, एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में 11,000 मिलीमीटर बरसात होती है और जिस क्षेत्र में से मैं आता हूँ वहाँ 100 मिलीमीटर बरसात भी नहीं होती है. दूसरा, बरसात के क्षेत्रीय इम्बैलेंस के साथ साथ में बरसात के समय को लेकर के भी अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ देश में हैं. ये सच है कि देश के बहुत बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है और देश के बहुत बड़े हिस्से में कई साल तक सूखा देखने को मिलता है. इसीलिए स्वर्गीय अटल जी ने
ये स्वप्न देखा था कि देश में सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफर किया जाए। उसी के चलते माननीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, उस कमेटी ने जो काम किया, बाद में पिछले 10 साल तक बीच में यूपीए के शासन में उसे शेल्फ कर दिया गया था, लेकिन पिछले 8 साल से वापस हमने उस पर काम किया है। 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए गए देश भर में जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, और यदि वो सब धरातल पर उतर जाते हैं तो उससे लगभग 35 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जा सकता है। हजारों मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन की स्कीम्स को खड़ा किया जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से संबद्ध 2 प्रश्न आज सूचीबद्ध हैं, इसलिए मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से कहना चाहता हूं। उन 30 लिंक्स जो आइडेंटिफाई किए गए उनकी सबकी पीएफआर बनी है, उसमें से 15 की डीपीआर भी जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। 5 प्रोजेक्ट को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में प्रायोरिटी से लिया गया, और उनमें से मैं गर्व के साथ में, खुशी के साथ में कह सकता हूं कि लगातार बार बार बातचीत करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने एक नई शुरुआत इस देश में की। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने देश में ये नदियों के जोड़ने के प्रकल्प के लिए पहला समझौता भारत सरकार के साथ में किया। केन और बेतवा नदी दोनों को जोड़ने का बहुत बड़ा लाभ ऐसे क्षेत्र में होगा जहां पीने का पानी भी सब उपलब्ध नहीं था। बुंदेलखंड के उस सूखे रीजन जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र में, वहां के जीवन में निश्चित रूप से इससे परिवर्तन आएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए राज्यों को आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता है। जो लिंक्स हमने, जो डीपीआरस बनाई हैं वो राज्यों के साथ में शेयर किए हैं। राज्य अपने सहमति बनाएं और हम निरंतर राज्यों के साथ में बातचीत करके उस सहमति को बनाने का प्रयास करते हैं। केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी जब सहमति बनानी थी, माननीय सभापति महोदय, मैं 3-4 बार खुद दोनों प्रदेशों में गया, दोनों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद जाकर के वो सहमति बनी। और बहुत छोटे विषय को लेकर के राज्यों के बीच में मतभेद रहता है। मुझे लगता है कि हम सब सदस्य जो बैठे हैं सभी किसी न किसी राज्य से आते हैं, और लगभग सभी राज्य कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान से प्रभावित होते हैं। हम अपने राज्यों के साथ में बैठ करके उन्हें किस तरह से लार्जर बेनिफिट्स ऑफ द नेशन एंड स्टेट्स अगर हम करें, इसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इससे लाभ होगा। क्वेश्चन ओवर है शॉर्ट में सर, बस हल्का सा, बस केवल हल्का सा दो पॉइंट में कि क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ध्यान में रख करके हर साल पानी बढ़ना है, क्या सरकार की कोई योजना उसके तहत भी है? दूसरा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ आपने तालमेल किया है जो वहां देरी हो रही है? बहुत बड़ी, मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का माननीय अध्यक्ष महोदय अभिनंदन किया है कि जो लिंक उनका था उस लिंक को लेकर के उन्होंने पहल की है। आने वाले, मैंने आप सभी राज्यों के माननीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि हम भी अपने राज्य में इस तरह के इनिशिएटिव्स को लें। सिर्फ जो खड़ा हो जाएगा ना उसको कभी सप्लीमेंट्री। विवेक नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के अनेक जिले इस योजना से लाभान्वित होंगे। जहां एक और केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना से सूखाग्रस्त क्षेत्रों के जल संकट की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पन्ना टाइगर रिजर्व व इसके प्रभाव की चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय उद्यान के भीतर निर्माण कार्य की वजह से 46 लाख से अधिक पेड़ काटे जाने की संभावना है। टाइगर रिजर्व कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों का घर भी है। इसके अलावा इस योजना के विकास से दोंदन बांध के तहत लगभग 6000 हेक्टेयर वन भूमि के जलमग्न होने का खतरा भी है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार इन मुद्दों से निपटने व पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे, इस हेतु क्या उपाय योजना करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बांध की परियोजना को बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, इन सब की अध्ययन भी होता है, उसका क्लियरेंस भी लिया जाता है। हमने जो केनर बेतवा परियोजना के लिए जो दौधन बांध बनाया जाना है, उसमें जो भूमि पन्ना टाइगर रिजर्व की सबमर्ज होने वाली है, उसका कंपनसेशन जो तय मानक है उनके अनुरूप उससे भी अधिक कंपनसेशन देने का प्रोविजन ऑलरेडी इसमें किया और राज्य सरकार इस पर बहुत तेज गति के साथ काम कर रही है। श्री नामा नागेश्वर राव जी।
थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब। ये ड्राउट का और फ्लड का ये दोनों इशू जो है ना कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने 3 पेजेस का फ्लड्स का बारे में जब क्वेश्चन पूछे तो 3 पेजेस का आंसर दिया है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना मोस्ट ऑफ द आंसर में जो कवर किया है उसमें रिवर लिंकिंग होने से ही ये इफेक्ट होगा बोल के बताया। पिछले 20 साल से जो है ना रिवर लिंकिंग का बारे में जो है ना हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। ये जो है ना सब मेनली जो है ना हम लोगों का कंट्री में फार्मर्स जो है ना अभी भी जो है ना 60% 70% जो है ना गांव में लोग रहता है। ये फ्लड्स एंड ड्राउट का वजह से जो है ना कंट्री में काफी कुछ जो है ना लोग जो है ना सफर कर रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन में आप रिवर लिंकिंग का बारे में काफी कुछ बताया, मगर उसका कोई टारगेटेड ये साल में हम ये करेगा, ये साल में ये करेगा, कोई टारगेटेड डेटा जो है ना नहीं दे पाया। दूसरा, हम लोग को जो है ना तेलंगाना बनने का पहले यही सिचुएशन था, पीने के लिए पानी नहीं था, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। एक गोदावरी को हम लोग जो है ना लिफ्ट करके एक 600 मीटर जो है ना वाटर को हम लोग लिफ्ट किया। अबो 600 मीटर मतलब अबो 1/2 किलोमीटर जो है ना सब पूरा एंटायर नहीं सब उसी कनेक्टेड सर। गोदावरी को जो है ना वेस्ट में जा रहा था, वो पानी को लिफ्ट करके पूरा जो है ना अभी एंटायर तेलंगाना में सिंचाई के लिए भी पीने के लिए भी पानी है और काफी कुछ जो है ना कंट्रोल किया। भाई स्पेसिफिक पॉइंट जो है ना मिनिस्टर से ये है, ये रिवर लिंकिंग का जो है ना कब होगा, कौन सा एक प्रोजेक्ट के बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया और बाकी जितना भी प्रोजेक्ट है उसका पढ़ने में उतना टाइम हमको नहीं मिलेगा, मगर उसका कोई टारगेटेड डेट है क्या, कब तक जो है ना रिवर लिंकिंग का कौन सा रिवर लिंकिंग कब तक होगा? थैंक यू। मैं माननीय सदस्य गणों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वरिष्ठ सदस्य ये प्रश्नकाल है, ये चर्चा का नहीं है, इसलिए प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें और मंत्री जी भी प्रश्नकाल को समझकर ही जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि बहुत जल्दी करना चाहिए, हम सभी की चिंता, और मैंने इस पर विस्तार से सबसे आग्रह किया है कि हम सब लोग भी इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करें। अधीर रंजन जी। Sir, in the reply statement, Minister has mentioned that to strengthen the structural measures of flood management, Minister implemented during 11 and 12 planned flood management program for providing central assistance to states for works related to flood control and erosion. सर, मैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बंगाल की, ये कटाव की चलते मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल के सारे तबाह, हर रोज रोजाना ये तबाह के मंजर हमें देखना पड़ता। जमीन जायदाद, मकान, मस्जिद, मंदिर सब तबाह हो जाते हैं नदी की एक कटाव की चलते। बंगाल सरकार को आपने इससे, मंत्री जी, बंगाल सरकार को आपने इस जो स्कीम है, इस स्कीम में कितना पैसा देने का योजना बनाया है, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न जो मूल प्रश्न था उससे प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है। आपने जवाब दिए? नहीं, मैं जवाब दिए, मूल से संबद्ध नहीं है, फिर भी जवाब दिया आपके प्रश्न का। और तब मुझे लगता है अधीर रंजन जी, अभी तबाही की चिंता जितनी नदी की कर रहे हो उतनी कांग्रेस की तबाही की चिंता भी करना शुरू कर रहे आपको दिया हुआ जवाब के ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, जो माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, जो चिंता व्यक्त की है, वो निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। लेकिन नदियों का कटाव जो है वो बहुत सारे विषयों से संबद्ध है। नदियों के फ्लड प्लेन्स में जिस तरह से एनक्रोचमेंट हुआ है वो भी एक कटाव का कारण बनता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के नदियों के तटबंधों को सुरक्षित करने और इन कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उनमें पिछले वर्षों में अब तक 1282 करोड़ रुपए की सहायता राज्य सरकारों को दी है। प्राथमिक रूप से बहुत राज्यों ने इसमें उत्कृष्ट काम किया है। यदि मैं उल्लेख करना चाहूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल के कालखंड में इस विषय को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में काम भी किया है। बहुत सारे जो है इस तरह के फ्लड इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। जिस राज्य से माननीय सदस्य आते हैं, उस राज्य से भी यदि प्रतिवेदन आता है तो उस प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद पे उस पर विचार किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस विषय पर नहीं,
इस विषय पर बहुत लंबी सूची है। अन्य नियम के तहत मैं कोशिश करूंगा, आप लिख के देंगे तो प्रयास कर पे इस पे चर्चा कराने का प्रयास करूंगा। हाँ, लिख के दे देंगे तो कराएंगे। आप तो खड़े हो गए थे इसलिए आपको मौका दिया ही नहीं, मैंने आपको देने वाला था। क्वेश्चन नंबर 24 श्री के सुंदरम, आप लिख के दो, सरकार भी तैयार है, करा देंगे। सर क्वेश्चन नंबर, अरे तैयार है ना सरकार ने, हाँ भरी है ना। आप विषय तो लिखते नहीं हो, फिर बताओ बस सदन में बोलते हैं। के सुंदरम 24, क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। Honorable members, whether the government proposes to increase the number of international air services from Coimbatore International Airport, and if so, the details thereof. Sir, Coimbatore is a very, very important airport for all of us in Tamil Nadu. And let me place it on record that as far as the government is concerned, we have given 5 countries Coimbatore as a point of call: Sharjah, Dubai, Singapore, Sri Lanka, UK and USA, 6 countries. Along with that, sir, today we have connectivity to Sharjah of 10 frequencies per week and Singapore 14 frequencies per week. As we are all aware, civil aviation is an unregulated sector. Airlines make their own decision based on economic viability for connectivity to certain cities. It is our effort to make sure that all cities in India do get connected. Specifically, as far as Coimbatore Airport is concerned, there are a lot of works that are ongoing at the airport to improve the modernity of that airport. We are today looking at additional aprons, 7 aprons at a cost of 23 crores, the resurfacing of the runway at about 47 crores. We're also planning probably a new cargo terminal. All of these are keeping in mind our current air terminal capacity of 18,000 square meters and a total throughput of passengers of almost 3.6 million per year. Supplementary. Honorable Minister rightly told Coimbatore is an important city in Tamil Nadu. Sir, Coimbatore district itself has more than 1 lakh MSME factories. Nearby Tirupur and Karur having more than 50,000 MSME factories. Coimbatore has more than 500 large-scale investment, and Karur and Tirupur also has more than 500 large-scale investment factories. These 3 districts itself, more than nearly 20 lakh employees are working. The daily footfall of Coimbatore Airport is nearly 10,000. Out of 10,000, more than 5% are international travelers. So the buyers coming to Coimbatore from different destinations are facing very difficult. So the growth of the Coimbatore depends upon the airport expansion. More than 20 years it is pending. Industries, political parties, we are representing continuously. But government is telling the reasons. I am not satisfied with these reasons, sir. If you compare other small airports, then footfall and international services, you compare Coimbatore Airport footfall and international services. Government take it seriously. Give us an opportunity to run at least 5 international airports immediately. Thank you, sir. So the member has raised a very valid point. Airports require connectivity. That connectivity can only be granted to airports if we build maximum capacity in those airports. In my previous answer, I have detailed the current connectivity in Coimbatore, the current works that our government is undertaking to strengthen Coimbatore. But there is one big impediment to modernizing and expanding airports. And that impediment is the availability of land from state governments. Now, the honourable member is a representative of his state government in his state, in Tamil Nadu. I do hope and I do request him to take up with the same fervour that he has in this House, the same agenda with his state government in Tamil Nadu, because for many, many years, we have been asking for almost 627.89 acres of land for Coimbatore Airport to be able to ensure
that today Coimbatore Airport, which can only avail of Code C planes to be able to land, which means 737s and Airbus 320s, we want to expand that facility to Code E aircraft so that wide-bodied aircraft can land in Coimbatore. But that is only possible if the state government gives us that land so that we can expand. And it is my commitment that if that land is made available to us by his state government in Tamil Nadu, then we will certainly expand that airport in the days to come. Honorable Balu Sir is a very, very senior member of this House, and please let me very respectfully respond to him. It is our effort to increase the runway length from the current 2,990 meters to 3,810 meters so that we can have Code E aircraft. We have represented to the state government many a time over many months and many years for this 627.89 acres of land to be handed over to us so that we are able to do that. If Balu Sahib uses it, sir, if I may kindly respond, sir, I have tried to, sir, if I, sir, if I may be given protection of the House. Thank you, Speaker, sir. Through you, I'd like to ask the Honorable. एक मिनट मणिकम जी के बाद Thank you, Speaker, sir. I'd like to ask through you, sir, the Honorable Minister regarding the Madurai Airport's international connectivity. Madurai is the temple city and the gateway to the south of Tamil Nadu. Madurai got its first international connectivity flight in 2012 in the Congress government. First to Colombo, then to Dubai. From 2014, Madurai got only a connectivity to Singapore. Will the Honorable Minister share the details whether there will be steps to connect Madurai with Kuala Lumpur, Muscat and UK? And will the Honorable Minister share the roadmap for the development of Madurai Airport? Thank you, sir. Sir, this question is on Coimbatore Airport, so first please let me respond to Honorable Balu Sahib. नहीं, मैंने आपको बालू जी का जवाब देने के लिए नहीं कहा है क्योंकि बालू जी को मैंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया है. Thank you, sir. Sir, I have to. ये व्यवस्था का प्रश्न है. Sir, through you. Sir, अलाउ करता बालू जी को. सर, आपके जरिए मुझे बालू जी को विनम्र पूर्वक कहना पड़ेगा कि मुझे उत्तर देने का मौका आपने नहीं दिया. पर जरूर अगर अलग से जरूर मुझे मिले तो मैं उत्तर जरूर दूंगा. I will certainly answer you if we meet separately outside the House. To answer my young friend's question, Manik Tagore ji, and I must say that he's always very, very pursuant with regard to connectivity for Madurai. He has rightly mentioned that we have today 4 connectivities from Madurai to Colombo, Dubai, Singapore through SpiceJet and Air India Express. As we are all aware that this is a deregulated sector, airlines take their decision based on economic viability. But on his pursuance, if he and I meet outside the House, we will together try and speak with airlines to see what can be done. Pete Natarajan, thank you, Speaker. Lok Sabha hai. Pete Natarajan साहब की. Thank you, Speaker, sir. Through you, if there is any financial assistance from the central government to the land acquisition, the completion for the land acquisition at Coimbatore Airport. Can you hear me, sir? Let me say this, that as far as development of airports are concerned, money for acquisition of land is not given by the central government. That has to be given by the state government to enable the central government to do the capital expenditure to build out those airports. As we are all aware today, airports no longer are very easy to build. They cost hundreds and thousands of crores, and that money is put in place from the central sector by Airports Authority of India and many private sector companies for the airports they're building out. Question number 25. Sri Arun Kumar Sagar. अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा माननीय
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे के बाद सड़क यातायात देश की यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व के अलावा देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सड़क के विकास पर निर्भर करती है। हम सभी को इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय नेतृत्व में विगत वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 91,247 किलोमीटर जो अप्रैल 2024 में थी, वह 20 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 50% बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हुई है। मान्यवर, निसंदेह देश भर में नेशनल हाईवे के निर्माण में काफी प्रगति आई है और हमने एक दिन में 37 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण की गति हासिल की है। यह उपलब्धि एक सेकंड हाईवे के निर्माण की गति हासिल की है। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। एक सेकंड सर। और दुनिया के किसी भी दूसरे देश में इसकी समानता नहीं है। कोविड-19 के महामारी के चलते हुए पैदा हुई मुश्किलों के बावजूद यह उपलब्धि हासिल करना बहुत उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र सांसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण चल रहा है और ओके निर्माण कार्य मंत्री जी। नो, धन्यवाद। प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो एक प्रश्न खड़ा किया है वो इनके क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल हाईवे 730C जो इनके क्षेत्र से होकर के गुजरता है और ये प्रोजेक्ट है अंडर ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है, ईपीसी मोड पर है। इनका जो प्रश्न है शायद ये आगे पूछना चाह रहे थे कि इनमें कुछ गुणवत्ता को लेकर के कुछ इनको महसूस हुआ है कमी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सड़क निर्माण का कार्य है और सड़क निर्माण, सड़कों में गुणवत्ता, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता, ये हमारी प्राथमिकता है। और एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको एक लैब स्थापित करने का भी निर्देश है, उन्होंने लैब भी स्थापित की है। अथॉरिटी इंजीनियर्स भी होता है जो भी स्टैंडर्ड को टेस्ट करता है। तो इनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने वैसे भी पूछा है कि भाई इसमें जो कमी है, अगर कोई वर्क खराब पाया गया तो उसको हम दोबारा ठीक करेंगे और कोई भी गुणवत्ता पे समझौता नहीं करती नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। थैंक यू। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं संतुष्ट हूं। धन्यवाद। और धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 26 डाल सिंह बिसेन। 26। माननीय मंत्री जी। Sir, a statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैंने ऐसा प्रश्न पूछा है अध्यक्ष महोदय जो उज्ज्वला गैस से संबंधित है और मध्य प्रदेश में लगभग 72 लाख उज्ज्वला गैस के कनेक्शन है। पर यह देखने में आ रहा है अध्यक्ष महोदय कि जिस उद्देश्य के साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को गैस देने की चिंता की है, पर देखने में आ रहा है कि उसके रिफिलिंग बहुत कम है और उसकी रिफिलिंग नहीं होने के कारण से जो उद्देश्य है वो लगभग कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या सरकार के सामने जब से उज्ज्वला गैस प्रारंभ हुई या जो प्रश्न के समय मैंने जो प्रश्न का 1 वर्ष का समय ऐसे कितने लोग हैं जो केवल एक बार गैस भराने के बाद दोबारा इन्होंने गैस नहीं भरा पाई और उनके कनेक्शन बंद पड़े हैं। और दूसरा, इसके कारण से जो शासन को जो फ्री गैस देने की योजना थी और रिफिलिंग नहीं करने के कारण से जो पेट्रोलियम विभाग को पैसा वापस नहीं मिल पाया, तो उससे लगभग हमारे पेट्रोलियम डिपार्टमेंट के हर एक उसको कितना लॉस हुआ और क्या इस दृष्टि से इसको पूरा करने के लिए रिफिलिंग के लिए क्या कोई जो सब्सिडी है उसको बढ़ाएंगे या रेट कम करेंगे? कृपया मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे। Mr. Speaker, sir, I would like to thank the
honourable member for asking this question and for allowing me the opportunity to place some basic facts before this House. मुझे लगता है इस विषय पे शायद हम में से कईयों को थोड़ी जानकारी में कुछ कमी है. So the first submission that I want to make before the House is that the number of LPG connections which stood at 14 crores in 2014 has gone up to 32.5 crores now. The Ujjwala scheme, which the honourable member is referring to, was introduced in 2016, and the intention was that by a stipulated date, we would have a total of 8 crores Ujjwala beneficiaries who would get, as per the scheme, the chula and 1 gas cylinder free, and then subsequently they would avail of purchases of Ujjwala cylinders. The scheme, which was introduced in 2016 for 8 crore beneficiaries, was completed many months in advance. If I remember correctly, 7 or 9 months before the stipulated date. We then took a decision subsequently, more recently, that to these 8 crore beneficiaries, we would add 1 crore additional beneficiaries. Now, that figure of 9 crores was also reached. In addition to that, we decided that maybe in order to meet the demand of those who felt that they needed it, and these are typically households of what is called below the poverty line. And then that below the poverty line, we added others who were also equally needy. And we added another 60 lakh. So today, 9 crores, 60 lakh beneficiaries of the Ujjwala scheme are there. Now, the honourable member suggests that some people did not take any cylinder after the first one. Yes, factually सही नहीं है. मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं. The price of LPG, Mr. Speaker, sir, because we are 55% dependent on imports, is set in accordance with the international price, which in the domestic Indian context is dependent on what is called the Saudi CP, or the Saudi contract price. During the recent period, the Saudi contract price went up by 303% internationally. It went up from something like 250 to 960. But thanks to the measures taken by the government and the determined resolve of the Honourable Prime Minister, we were able to confine the price of domestic gas to as little as 28%, even though the international price had gone up to 303%. What is the present price now? I will, if you allow me to, if you allow me to complete that, I will give you all the answers. Even when the international price was going up, we maintained a lower price. Now, the honourable member suggests that some people did not avail of. The consumption of Ujjwala beneficiaries on an average was 3 cylinders per household. And during this period, it has gone up to 3.69 cylinders per household. So the consumption is going up, not coming down. The consumption typically, Mr. Speaker, sir, depends on what a typical household needs. And a typical household, let us say, husband and wife and 2 children, on an average would need, in my assessment, but 3.5 or 4 cylinders at the most. Now we are in a situation of what we do with the international price. Now the honourable member, the leader of the opposition party? Congress party. Okay, Congress party. I have a basic submission to make. When during the course of the pandemic, when this government, led by the Honourable Prime Minister, was feeding 800 million people 3 meals of dry ration in a day, when we produced 212 or 220 crores overall of doses of free vaccine, which was distributed to people free. I am. Don't trot out this lame SPO. No, what has no. Rate of it, you know the rate of it. I will please sit down. I will enlighten it. Whether subsidy
under this government. I am not surprised you are being devastated at the polls because your basic facts are not right. Let me tell you what has happened. Let me tell you what has happened. Sir, I am quite happy to allow the honourable member to vent his this thing. I can fully understand his frustration. Let me give you the basic facts. From May of this year, we have introduced a payment of rupees 200 through direct beneficiary scheme, which goes straight into the khata or the account of the beneficiary of the scheme. So today the situation is a amount of 200 rupees per cylinder is being given. Now the answer which is sought, I will give you the full figures of Saudi CP declared by Aramco, which is the Saudi company. In April 2020, it was $236 per metric ton. In May 20, it was $340 per. Subsidy of this government has been prohibited to the poor people. Listen, when I want to explain to the honourable member that in March 2020, when economic activity throughout the world came to a grinding halt, the price of gas dropped. When the price of gas dropped, subsidy was not necessary. Now when the price went up, we have introduced 200 rupees per cylinder beneficiaries. Why would you want us to give? But the prices have been dipping. You are not giving any respect to the poor of this country. You have to listen to us. You are bound up place. You are प्रश्नकाल समाप्त।